आप लॉ करते हैं, उसके बाद वकील बनते हैं, लेकिन कामयाब कितने होंगे ये आपको भी नहीं मालूम होता। ये आपकी मेहनत होती है, आपकी काबिलियत होती है। तो एक कामयाब वकील बनने का क्या गुण होता है, और वकील बनने के अलावा वो क्या काम होने चाहिए जिससे कि आपकी पर्सनालिटी लीगल मायने में आपकी पर्सनालिटी एनहांस करे, इसके लिए हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के जो सीनियर एडवोकेट है विवेक सूद साहब, उनसे हम बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं टीएलपी शख्सियत, और मैं हूं खुर्रम निजामी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएलपी शख्सियत में। सूद साहब, थैंक यू। 30 साल की प्रैक्टिस, तकरीबन 7 किताबें, कहाँ आज अपने को पाते हैं? It's a journey. I Yeah. have considered my practice to be a long journey, a marathon. It's not a 100-meter race. तो इस जर्नी का ये हिस्सा है, और ये 7 किताबें और 30 साल मुझे हो गए लीगल प्रोफेशन में। तो मैं इस जर्नी, आई होप ये जर्नी के कहीं मिडिल में हूँ। इस मैराथन में अभी मिडिल में हूँ। So there is lots to do, lots to travel. And this is, I think, I am only in the middle of this beautiful journey, which I started in 1992. 1992। Yes. तो आपकी जो एक्सरसाइज है सर विवेक सूद साहब, वो आपकी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि मैं तमाम चीजें पढ़ रहा था, जो किताबें पढ़ा था साइबर क्राइम के में। फंडामेंटल राइट टू इंटरनेट, यू आर द फर्स्ट पर्सन टू कॉइन द वर्ड fundamental rights to internet in 2010. At that time internet was not so common for us, for the normal people, for a layman. Yes. So how you coined that particular word, we want to know. Internet has become a way of life. Without internet connectivity, you cannot even survive for 1 hour. It is a necessity in our lives. We need the internet 24/7. So I could see that internet access is emerging as a right and as a fundamental right. And therefore, I found this topic to be very interesting and engaging. So इस दौरान, इस research के दौरान, I discovered the concept of the fundamental right to internet, which I coined in the year 2010. In fact, it was the title of my book. And later on in 2019, in the Kashmir internet shutdown case, the Supreme Court for the first time used the expression, the fundamental right to internet. देखिए सर, 30 साल हो गए। 30 साल का वक्फा बहुत लंबा होता है। यू हैव अ लॉन्ग जर्नी टू टेल एंड शेयर। But one thing I would like to ask, when you started your career, or when you entered into the legal fraternity or in the courtroom, how was your first day when you were in the court? And what was that particular court? It was a session, a high court, or other court? So my first day in the court was in the Delhi High Court. And as a young lawyer, as a young entrant to the bar, I was very keen. It was like an adventure beginning in my life. I come from a lawyer's family. My grandfather was a lawyer. My father was a lawyer, a leading income tax lawyer in Punjab, Chandigarh, Ludhiana, etc. So I was part of the legal system. मुझे याद है कि बचपन में छुट्टियों में मुझे वो बुला लेते थे अपने ऑफिस में, just to observe, how the office is functioning. And I would accompany my father to the court also from time to time. So I feel that law was in my DNA. तो जब मैं पहले दिन दिल्ली हाई कोर्ट गया, तो मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये एकदम नई जगह है, या this is an alien territory for me. I found it to be like a home. So I adjusted myself to the ambience, to the environment, to the surroundings of the High Court on day one itself. And I could feel that this is my calling. यही मेरी जो है कर्म भूमि और धर्म भूमि, मेरी यही रहेगी दिल्ली हाई कोर्ट, और वही हुआ। एंड मैं ये बोलना चाहूंगा
it has not been a long journey. It was just the other day when I started. So, I would not call it a very long journey. मुझे नहीं पता ये 30 साल कैसे निकल गए, बहुत जल्दी निकल गए. And I hope the next 20-30 years move slowly so that I can enjoy every moment of this time. So you are lucky. You are the third generation lawyer. You are lucky, but the first generation lawyer not so much lucky to get the chamber, to get the blessings of the seniors, to get adjust into the courtroom scenes. So what you have to suggest for the first generation lawyers who are new to this profession? First of all, I must say that my grandfather practiced in Lahore and later on, in Punjab. My father also practiced in Punjab. So insofar as Delhi is concerned, I am a first generation lawyer in Delhi. Okay. I started my practice on my own and I built it brick by brick. हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरे डीएनए में लॉ था, क्योंकि मेरे पिताजी भी बहुत एक सीनियर वकील रहे और मेरे ग्रैंडफादर भी बहुत सीनियर वकील रहे, तो लॉ मेरे ब्लड में था. बट आई स्टार्टेड ऑन माय ओन, of course, with the blessings of my parents, and my father supported me. He gave me a beautiful house. He applied for a chamber, which I got. So I definitely got some legacy, but I built my practice on my own. Now, having said this, मैं तो कुछ चंद प्रिंसिपल्स में बिलीव करता हूं, जो मैं कहूंगा, जो न्यू कमर्स हैं, जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं, मैं उनको कुछ अपने प्रिंसिपल्स शेयर करूंगा. द फर्स्ट प्रिंसिपल इज हार्ड वर्क. हार्ड वर्क, हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क. मेहनत करिए, हर ब्रीफ में, हर केस में अपनी जान डालिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फी. सेकेंडली, इनिशियल ईयर्स में द क्वांटम ऑफ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो डोंट लुक एट द फी, वर्क फॉर फ्री. Okay. अगर आपके पास 100 फाइल्स इकट्ठी हो जाएं, आप अगर 100 फाइल्स इकट्ठी कर लें 1 या 2 साल या 3 साल में, इट मीन्स योर प्रैक्टिस हैज बिगन. So, and commitment is very important. The profession is like a marathon. It is not a 100-meter race. So don't expect results in the very beginning. Be patient, persevere करिए और ईमानदारी से काम करिए. ये नहीं कि किसी ब्रीफ में फीस बहुत ज्यादा आई है तो उसमें तो ज्यादा मेहनत कर ली, और जो फ्री के हैं, जो गरीब क्लाइंट है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसमें मेहनत नहीं करी. प्लीज पुट इक्वल हार्ड वर्क इनटू एवरी केस. देन नेवर गो टू द कोर्ट अनप्रिपेयर्ड. तारीख ले लीजिए, अगर आपने तैयारी नहीं करी है, तारीख ले लीजिए. कोई भी एक्सक्यूज दे दीजिए तारीख लेने के लिए, बट बिना तैयारी के मैदान में मत उतरिए. So these are some of the principles I can suggest to the young lawyers, to the first generation lawyers. और घबराइए मत, ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, आपको भी मौका मिलेगा. ठीक है, जिनके पास लेगेसी होती है उनके पास केसेस होते हैं टू प्रूव देयर वर्थ. But it is not as if lawyers who are first generation, they have not been successful in the profession. In fact, the biggest lawyers have been first generation lawyers. So don't be afraid of the fact that you are a first generation lawyer. But sir, one thing I would like to ask, जब कहा कि go to the court with preparation, जब तैयारी की बात होती है तो एक लॉयर के लिए तैयारी का मतलब क्या होता है? कैसे वो तैयारी करें? तैयारी का मतलब ये होता है कि जो फैक्ट्स हैं, सबसे पहले तो जो फैक्ट्स ऑफ द केस हैं उनको मार्शल करिए. उनको उन पे कमांड होना चाहिए आपको फैक्ट्स के ऊपर. फिर फैक्ट्स पे क्या लीगल इश्यूज अराइज होते हैं, उन फैक्ट्स पे उन लीगल इश्यूज को पहचानिए, उन लीगल इश्यूज को क्लासिफाई करिए और फिर अपनी रिसर्च करिए उन लीगल इश्यूज पे, और जो लीगल प्रोविजंस हैं उनको उन फैक्ट्स पे अप्लाई करिए.
और इसके बाद अपने आर्ग्यूमेंट्स को डेवलप करिए और आर्ग्यूमेंट्स के सपोर्ट में जजमेंट्स निकालिए, केस लॉ निकालिए, प्रेसिडेंट्स निकालिए. So the process is very simple, I would say. Marshal the facts, apply the law, and take judgments in support of your arguments. तो 30 साल के बाद आप एक नई फील्ड में वेंचर करने जा रहे हैं, पॉलिटिकल फील्ड विद इन द लीगल फर्टर्निटी. आप शायद चुनाव लड़ने जा रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट बार का. तो ये जहन में कैसे आया? पहली बार 30 साल के बाद दम सा के जहन में आता कि नहीं, मुझे चुनाव भी लड़ना चाहिए. तो नेतागिरी और वकालत साथ कैसे चलेगी, और क्यों नेतागिरी क्यों करना चाहते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इसको नेतागिरी नहीं कहूंगा, मैं इसको एक लीडरशिप रोल कहूंगा. मुझे अब, आई हैव बीन इन द प्रोफेशन फॉर 30 years. I have experience behind me. I have authored 7 books in this space. I have been a very busy lawyer. I got designated in 2015 as a senior advocate. Now I feel I can contribute to the cause of the bar. I can contribute to the cause of the legal fraternity. I understand the issues, pertaining to young lawyers, pertaining to lady lawyers, pertaining to infrastructure in the Delhi High Court. I feel I can positively contribute to the cause of the bar. तो ये मुझे जब मेरी ये मुद्दे मेरे माइंड में, जब मेरे माइंड में ये आया कि आई एम रेडी नाउ टू टेक अ लीडरशिप रोल, then I decided that I will contest for the president's election to the Delhi High Court Bar Association, which are expected to be later this year or perhaps next year. Okay. So I would want to contribute to the cause of the bar, especially for the young lawyers, lady lawyers, first generation lawyers, जो आपने बोला. So therefore I have accepted this challenge. Ajay Sood sahab, coming back to your practice, one thing I would like to know, and everyone would like to know, that which case has given you immense satisfaction, whatever the result may be? Every case has given me immense satisfaction. However, कुछ ऐसे केसेस हैं जो यादगार केसेस बन जाते हैं. For example, I was one of the counsels in the Jessica Lal murder case. Yeah. For one of the accused. तो वो एक बहुत ही बड़ा केस था, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट था मेरे करियर में. तो उनमें से जो 7 या 8 अक्यूज थे, उनमें से एक अक्यूज मेरे क्लाइंट बने. He had the confidence to engage me. Now this I go back about at least 15 years back. Then मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग केस फाइट किया था सुप्रीम कोर्ट में. It is called सोनू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. इट्स अ लैंडमार्क जजमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की एडमिसिबिलिटी पे एक लैंडमार्क जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट की, जो आज भी साइट होती है. Then I was also a part of the Telgi scam. You know that Telgi scam mein I represented a police officer, Mr. Puran Singh, in so many of his cases, and that's when I learned the art of cross examination. मैंने कम से कम 500-700 गवाहों को क्रॉस एग्जामिन किया है अपने करियर में. Then I have done a lot of work for under trials. एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे एक मैटर था, मामला था कि भी जो अंडर ट्रायल्स हैं या जिनकी अपील्स पेंडिंग हैं हाई कोर्ट में, उनको पैरोल क्यों नहीं मिलता, उनको फरलो क्यों नहीं मिलता, जबकि जो लोग कन्विक्ट हो जाते हैं हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से, उनको पैरोल और फरलो मिलता है. तो दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है कि इंटरिम बेल मिलनी चाहिए जिनकी अपील्स पेंडिंग है हाई कोर्ट में और जो जेल में बंद हैं, ऑन द सेम ग्राउंड्स जिन पे पैरोल मिलती है टू द अदर्स. तो ऐसे बहुत सारे केसेस जो मैंने किए जिनका इम्पैक्ट ऑन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रिजनर्स रहा है.
So these cases have given me immense satisfaction. But I come back to where I started from. Every brief gives me a high. Every brief is a challenge. Every brief requires equal amount of hard work. So every brief has given me immense satisfaction. सर एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ कि कई लोग के जहन में सवाल जरूर आएगा कि इतनी अच्छी आपका जर्नी रही है लीगल फर्टर्निटी में। आप सीनियर एडवोकेट भी हो गए थे 2011 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 2015 में आप सीनियर एडवोकेट हो गए थे। कभी जजशिप के लिए आपने ट्राई नहीं किया? और ये अपॉर्चुनिटी आपको कभी मिली नहीं कि यू मैंने बिकम कभी द जज? कोशिश नहीं की, मैंने कभी कोशिश नहीं की जज बनने की, मगर मैं आई कैन ऑनेस्टली कन्फेस, मेरा नाम दिल्ली हाई कोर्ट जजशिप के लिए 2 या 3 बार उठा और चला। मगर मैं ये कहूंगा कि आई एम सेमीफाइनलिस्ट। जैसे वो साउथ अफ्रीकन टीम थी, उनको कहते थे कि भी ये फाइनल में नहीं जीत पाते, तो ये सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल या फाइनल तक ही पहुंच पाते हैं। तो शायद मेरी भी डेस्टिनी में यही लिखा है कि मुझे एक वकील या एक सीनियर वकील ही रहना है। और मैंने कभी कोशिश नहीं करी, मैंने कभी जजशिप को चेज नहीं किया, मैंने कभी लॉबिंग नहीं करी, मैंने कभी बहुत ज्यादा पुश नहीं किया, बिल्कुल भी पुश नहीं किया, बिकॉज आई बीन वेरी हैप्पी इन माई प्रैक्टिस। हाउएवर, अगर ये जजशिप की इन्विटेशन आती एट द करेक्ट एज, दैट इज बाय द एज ऑफ 50, अगर ये आती तो मैं इसको वेलकम करता, and I would have accepted the invitation, because the saying is never refuse the bench. But now I am 55, I am very happy as a senior advocate, and who knows the future? You know, maybe some more opportunities may come in future from the Supreme Court, etc., etc. डेस्टिनी के लिए आप, डेस्टिनी के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, what the future holds for me, but I am very happy as a senior advocate. You are very happy as a senior advocate. एक नई शख्सियत के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक लीजिए इजाजत, नमस्कार।